Hello students, welcome to another video, and in this video we are going to discuss a poem called The Mirror by Sylvia Plath. Now about the poem and the poet. Now who's Sylvia Plath? She is an American poet and she has written down a lot of poems as well as she has published a single novel called The Bell Jar. Okay, now this mirror, the poem Mirror, it's an autobiographical account of the mirror itself. Right, it's not the autobiographical account of the poet, but instead of the mirror. And yes, autobiographical means it's told from the perspective of the mirror. Okay, now mirror reflects the face of a woman who constantly seeks validation, who constantly wants assurance that she is pretty, that she is beautiful. Okay, but as you know, mirror reflects whatever is kept in front of it. So this mirror also, it reflects the truth, and the woman is highly dissatisfied with the mirror. Now let's move on. Let's start the poem. I am silver and exact. I have no preconceptions. Whatever I see, I swallow immediately, just as it is, unmisted by love or dislike. I am not cruel, only truthful. The eye of a little god, four-cornered. यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है? The mirror. Over here, I is the mirror. तो mirror कह रहा है that I am silver. ठीक है, mirror मतलब I am silver. Silver माने shiny. ठीक है, and exact. Exact मतलब precise. जो आप मेरे सामने रखोगे, मैं उसी का रिफ्लेक्शन आपको दिखाऊंगा. As it is. No changes. ठीक है, as it is. Exact. I have no preconceptions. मतलब I am not going to be a judge. मैं जज नहीं बनूंगा, मैं किसी के बारे में कोई जजमेंटल व्यू पॉइंट भी नहीं दूंगा. I have no preconceptions. Whatever I see, I swallow immediately. जो भी मैं देखता हूँ, मैं उसको पी जाता हूँ. In the sense, मेरे सामने आप जो भी रखोगे, जैसे रखोगे, I am going to reflect it. Reflect it as it is. ठीक है, जैसे रखोगे, वैसे ही आपको दिखाऊंगा. Unmisted by love or dislike. See, when I'll ask you about, let's say, another person, about your friend, तो तुम्हारा वो क्या होगा? हाँ, वो मेरी दोस्त है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा पढ़ाई करती है. लेकिन ये जो आपका ओपिनियन है आपके दोस्त के बारे में, ये हर लड़की का तो ओपिनियन नहीं होगा, कोई और कुछ और कहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे मिरर कह रहा है that the person standing in front of let's say the mirror को मैं यहाँ पे एक personification कर रही हूँ. personification मतलब giving human like qualities to a non-living object. Okay, so mirror is saying that if a person stands in front of me, I am going to reflect the exact image of the person. ठीक है, I am not in love with that person, nor do I hate that person. तो उनका जो रिफ्लेक्शन होगा वो किसी प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके का कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं करूंगा. मेरे सामने जो जैसा खड़ा रहेगा मैं उसका इमेज उसी तरह रिफ्लेक्ट करूंगा. ओके, आई एम नॉट क्रूएल, ओनली ट्रूथफुल. नाउ रिमेंबर, ऑनेस्टी कैन हर्ट, ट्रूथ कैन हर्ट. भले ही ट्रूथ, ऑनेस्ट, I mean, yeah, of course it hurts, but then people say that honest people are cruel in nature. Q. Because they don't mask their words. They don't change their words while presenting anything, while talking about anything. उनको जो मन में आए, जैसा आए, जो वो सोच रहे हो, सही हो, immediately वो बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं डायरेक्ट. तो हम बोलते हैं कि यार उस इंसान से बात करना ही बेकार है, वो मतलब कुछ सोचता नहीं है और बहुत बुरा लगता है उससे बात करने के बाद. Why? Because that person is completely barely honest. Sorry, barely not, completely honest. Okay, तो यहाँ पे this mirror is saying, see, I know I'm honest, I know I'm truthful, but that doesn't mean I'm cruel. Okay, I'm not cruel. The eye of a little god, four-cornered. You see this image of the mirror? It's how is it? It's rectangle and it has got four corners. Okay,
फोर कॉर्नर समझ में आया? आई ऑफ अ लिटिल गॉड। आई मतलब जो जैसा दिखता है वैसा है, ठीक है। ऑफ अ लिटिल गॉड, हम समटाइम्स कहते हैं ना कि गॉड बायस्ड है, ये है वो है, बट नो, इट्स लाइक द मिरर is referred to the god, okay, like a little god. That is, it shows what it sees, it reflects what it sees, it reflects the truth. Why we compare god with truth? Oh, satyam shivam sundaram, right? We compare god with truth, so here the mirror is also compared to god in terms of truthfulness, okay. And he is like a little god who cannot lie, जो सब देखता है और वैसे ही रिफ्लेक्ट करता है, एंड ही कैनॉट लाई, ही इज बीइंग कंप्लीटली ऑनेस्ट, एंड उसका अपीयरेंस कैसा है? फोर कॉर्नर्ड, ठीक है, कॉर्नर्स, फोर कॉर्नर्स, ओके। Most of the time I meditate on the opposite wall. It is pink with speckles. I have looked at it so long, I think it is part of my heart, but it flickers. Faces and darkness separate us over and over. Now he is saying that I am kept in a hanging position on one wall. Okay. Now in front of me there is another wall, and that wall is kind of pink in color, and it has got spots over all over it. वो spots हो सकता है क्योंकि हो सकता है वो कमरा बहुत पुराना हो, so the paint is the paint that is falling off, या फिर मे बी वो किसी तरीके का वॉलपेपर यूज कर रहा होगा वो इंसान, पिंक वॉलपेपर विथ बॉबी white print on it, ठीक है. So he is saying that right opposite to me there is a wall like that, and I kind of keep on looking at that wall. Sometimes I feel as if that wall has become a part of me, ठीक है, मतलब वो आके मुझ में समा गया है, उस तरीके का मुझे कभी कभार फीलिंग आता है. Why? Because इतने दिनों से इतना ही ज्यादा मैं घूरता रहता हूँ उस वॉल को, so I feel as if that wall has become a part of me. Okay, now I think it is a part of my heart, but it flickers. It flickers मतलब बल्ब है ना, फ्लोरेसेंट बल्ब ऑन ऑफ करोगे, ठीक है, या फिर उसका कभी कभार वोल्टेज शॉर्टेज होता है आपके घर में, तो बल्ब क्या होता है, थोड़ा ब्राइट लगता है, कभी डिम हो जाता है, फिर से ब्राइट डिम ऐसा होता है. सिमिलरली दिस मिरर इज सेइंग दैट समटाइम्स हमारा ये जो कनेक्शन है, मतलब मेरा उस वॉल के साथ जो कनेक्शन है, कभी कभार वो कनेक्शन थोड़ा टूट जाता है, फ्लिकर होता है. क्यों फ्लिकर होता है? बिकॉज वन, the day changes into night, the night changes into day. इसीलिए मतलब वो जो सन रेस वो कभी वॉल के ऊपर आता है फिर चला जाता है, या फिर कोई रात हुआ तो कोई स्विच ऑन कर लेता है लाइट, अगेन स्विच ऑफ कर लेता है, दैट काइंड ऑफ थिंग. Second, and the most important thing is that sometimes the woman of the house, she comes to look at herself in the mirror, and when she stands in front of the mirror, she kind of obstructs the viewpoint of the mirror, the view of the mirror, ठीक है. तो मिरर और वॉल के बीच जो कनेक्शन है वो कैसे टूटता है? when the woman of the house, she comes and stands in front of the mirror, okay? और ये बार बार होता है, इस तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन बार बार होता है. now I am a lake, a woman bends over me. I am a lake, that means the mirror has transformed into a lake, not in a physical sense, but yeah, in a metaphorical sense, okay. now I am a lake and a woman bends over me. Okay, bends over me in the sense, ये image देख रहे हो आप? See, the woman is inside that lake and she is bending over the waters, so she is seeing her reflection as well in the water. Can you see that? Okay, searching my reaches for what she really is. तो ये जो woman of the house है, she comes over to me and all of a sudden I get transformed into a lake,
and she kind of searches through the waters, through the ripples. She searches for what? She searches for her image. Okay. मतलब सी हमारी जो वुमन है यहाँ वो एजेड वुमन है, हो सकता है वो मिडिल एज की हो, गोइंग टुवर्ड्स ओल्ड एज। तो जब वो अपना चेहरा देखती है मिरर में, तो उसको अपने चेहरे पे झुर्रियां दिखती है, फाइन लाइंस दिखते हैं, रिंकल्स दिखता है, वगैरह वगैरह, एंड शी डजंट वांट टू accept that she is aging. Okay, so she goes on searching in her reflection that no, this is not how I look. I'm still beautiful. I'm still in my youth. Okay, this is not what I am. Okay, तो वो accept नहीं कर पाती है अपना inevitable age को, मतलब बढ़ती उम्र को वो accept नहीं कर पा रही है. Then she turns to those liars, the candles or the moon. I see her back and reflected faithfully. So now she is looking in front of the mirror and she is thoroughly dissatisfied with the way she is looking. So consolation के लिए she is turning towards the liars. Liars मतलब जो लोग झूठ बोलते हैं. और यहाँ पे liars कौन है? The candle and the moon. क्योंकि normally तुम जैसे भी दिखते हो, कैंडल लाइट में या फिर मून लाइट के नीचे, that silver beams, उसके नीचे you are going to look really pretty. क्यों? वो जो गेम चलता है ना, शैडो गेम, शैडो एंड लाइट का जो गेम होता है, जो कि कैंडल और मून खेलते हैं, द वुमन फील्स शी इज वेरी प्रिटी अंडर मून लाइट, ओके, और इन द कैंडल लाइट. तो वो जैसे अपना उड़ती है ना, तो उसका बैक गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द मिरर. तो मिरर जो है, जैसे चेहरे को ट्रूथफुली रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसी तरह उसके बैक को भी ट्रूथफुली रिफ्लेक्ट कर रहा है. ओके. She rewards me with tears and an agitation of hands. Now she doesn't like the fact that as a mirror, I am doing my job honestly. She doesn't like it. और वो अपना जो गुस्सा है वो कैसे निकालती है? Through tears and through agitation of hands. ठीक है, ये साइड में देख रहे हो? वो जो इमेज है that a woman is standing, a middle-aged woman is standing in front of the mirror with folded hands. तो यहाँ पे folded hands भी होता है, या फिर मुट्ठी करके ऐसे with fists in the air. Why? क्यों? मैं ऐसी क्यों हूँ? तुम झूठे हो, तुम सच्चे नहीं हो, उस तरीके का. ठीक है. She's frustrated with the fact that she's aging. I am important to her. She comes and goes. चाहे वो कितना भी गुस्सा कर ले मेरे ऊपर, बट चाहे वो कितना भी गुस्सा कर ले मेरे ऊपर, शी इज गोइंग टू विजिट मी अगेन एंड अगेन. आएगी, कुछ बोलेगी, फिर जाएगी, फिर से आएगी, फिर से कुछ बोलेगी, फिर जाएगी, लेकिन आती रहेगी. ओके, आती रहेगी. वाई? वुमेन कैन नॉट लिव विदाउट मिरर. लेट्स बी ऑनेस्ट, वी कांट लिव विदाउट मिरर. हमें मिरर चाहिए. जब हम नॉर्मल मिरर नहीं देख सकते, हम कैमरा का वो फ्रंट कैमरा ऑन करके अपने आप को देखते हैं, राइट? Each morning, it is her face that replaces the darkness. Every morning, जो darkness होता है, जो darkness मेरे सामने छाया रहता है, मैं मतलब मिरर, मेरे सामने जो छाया रहता है darkness, that darkness is obstructed by the image of the woman. क्योंकि हर सुबह वो आ जाती है अपना चेहरा देखने in the mirror. Okay, हर सुबह आ जाती है. In me, she has drowned a young girl. See the word drowned? Drowned यानी कि the lake अभी ट्रांसफॉर्म्ड स्टेट में है. द लेक जो मिरर अभी ट्रांसफॉर्म्ड स्टेट में है, मतलब मिरर इज राइट नाउ अ लेक. इन मी शी हैज ड्राउन्ड अ यंग गर्ल एंड इन मी एन ओल्ड वुमन. दैट मीन्स आई एज अ मिरर, आई हैव सीन इट ऑल. मैं उसको बचपन से देखता आ रहा हूँ, right from the age of 5, 6, 16, 17, 20, 25, 30, 35, 38, 40, 46, 56, even now also. Her beauty, her youth, I have seen it all. Everything, every passing day I have seen it. Rises toward her day after day like a terrible fish. What rises toward her? Age. That aging thing, that aging process is slowly creeping up. And that is
turning her from a youthful woman to an old woman. That is turning her skin from a supple, soft skin to a scaly, wrinkled, flaky skin like that of a fish. ओके कभी फिश के जो स्केल्स हैं देखे हो? ओके कैसे दिखते हैं वो? स्केली स्केली स्ट्रक्चर. नाउ स्केली स्ट्रक्चर यूजुअली ह्यूमन का स्किन जो है काफी सॉफ्ट होता है. एंड व्हेन वी कॉल अ ह्यूमन स्किन टू बी स्केली, दैट मीन्स क्या है? एज हो गया है और उनका स्किन भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है विथ एज. ओके स्केल्स हो रहे हैं मतलब एज. स्किन के ऊपर झुर्रियां आ रही है, स्किन के ऊपर ड्राई स्किन हो रहा है, स्किन फ्लेकी हो रहा है. ओके स्किन हैज लॉस्ट इट्स यूथ हम बोलते हैं विथ एज. ओके यहाँ पे अगर आप इमेज देख रहे हो, यू कैन सी द वुमन, द लाफिंग वुमन. रिंकल्स हैं, झुर्रियां हैं. कैन यू नोटिस द स्किन? इज इट सॉफ्ट? इज इट प्लेन? नो, it's a crisscross of wrinkles. Okay, crisscross of wrinkles. Scaly pattern की तरह है. Right? Okay. Now these are some figures of speech. अगर question आए appreciate the poem Mirror, then remember to write whatever you have understood about the poem Mirror. Also include a line that this poem has been written by Sylvia Plath. Also include the figures of speech present in the poem. क्योंकि जब क्वेश्चन आता है अप्रिशिएट द पोएम, फिगर्स ऑफ स्पीच को इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट है. सो योर पोएम, दिस पोएम द मिरर, ऑल्सो कंटेन्स फ्यू फिगर्स ऑफ स्पीच. ओके यूजुअली वो पर्सोनिफिकेशन और मेटाफर है. तो ड्राउनिंग एंड राइजिंग, दैट्स अ मेटाफर फॉर टाइम एंड एजिंग. कैंडल्स एंड मून, दे आर पर्सोनिफाइड एज लायर्स. हम लायर किसको बोलते हैं? एक ह्यूमन बीइंग को ही हम लायर बोलते हैं ना. हम थोड़े ना जाके किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लायर बुलाएंगे. तो यहाँ पे कैंडल्स एंड मून्स को, जो कि नॉन लिविंग है यूजुअली इन नॉर्मल सेंस में, नॉन ह्यूमन एंटिटी, ठीक है, नॉन ह्यूमन एंटिटी है, उनको लायर्स बुलाया जा रहा है. सो द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड ओवर हियर इज personification. Okay, now this poem is an autobiographical account of a mirror. This poem talks of a woman's inability to face the truth. The truth is aging, and the woman doesn't want to face the truth. This poem talks of the inevitability of aging and the temporality of beauty and youth. Temporality matlab that which is controlled by time. Beauty is something that time controls. If you are 60, you don't expect to look like 16 years old. Yes, आप heart wise young रह सकते हो, आप mind wise young रह सकते हो, but your physical appearance won't be that of a 16-year-old, right? Time will have its effect. Youth as well. Right. Okay. Now I'm done with this poem. Moving on. And this is Sylvia Plath. Okay. She is an excellent writer, poetess. Okay. Thank you so much. Please subscribe to my channel if you like this video.